Hello and welcome to Do I Like It, a Quint production where we review anything and everything under the sun. मेरा नाम है प्रतीक लुद्धू and in this episode, I'll be talking about Irrfan Khan. 29th April 2020 को Irrfan Khan left this world following a long battle with cancer, and this year I would want to take this chance to talk about his filmography and talk about the kind of contribution he has had not only to Indian cinema but to me as well. मतलब personally मैं थोड़ी बात करना चाहता हूँ. Irrfan was one of those actors जो मतलब यार truly जिसे कहते हैं ना once in a generation ऐसा actor आता है. And I know कि ये चीज़ बहुत ही common हो गई है कि किसी को भी बोल देना he's the greatest or he's classic or he's once in a generation. But I would say, and this is like a very थोड़ी bold statement है, after Amitabh Bachchan, Naseeruddin Shah and Shah Rukh Khan, I won't even say Amir or Salman, वो सब भी नहीं, these three people, Naseeruddin Shah, Amitabh Bachchan and Shah Rukh Khan, I think Irrfan is that one actor जो उसके बाद नहीं हुआ और मुझे नहीं लगता वैसा होगा. These four people I think changed the way we look at cinema, changed the way we look at men expressing in front of the camera, and all of them obviously did it in their way. And I think Irrfan did it his unique way, where he was, I think, one of the first people in that crop of new age actors jo aaj I say this all the time that Irrfan walked so that people like Manoj Bajpayee, Nawazuddin Siddiqui, all of these people could run, right? Because I think he was one of the first people after the so-called batch of Naseeruddin Shah and Om Puri, जो मतलब actors तो बहुत अच्छे बन गए over time and they had their training and whatnot, but they got a level of commercial viability and overall respect to the art of acting. And I think Irrfan is that one person जिसने not even just Bollywood, Hollywood, मतलब he is the GOAT जिसे कहते हैं जो ये न्यू एज एक्टिंग का. सो इन दिस एपिसोड मैंने सोचा यार, बिकॉज उनकी नई फिल्म भी आ रही है, नई नहीं है टेक्निकली, इट्स 2017 रिलीज इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट द फिल्म इज गेटिंग अ थिएट्रिकल रिलीज एंड इट्स हिज डेथ एनिवर्सरी एज वेल. सो आई थॉट लेट मी लुक बैक एट सम ऑफ हिज थोड़ा बढ़िया परफॉर्मेंसेज, बट ऐसी परफॉर्मेंसेज जिनके बारे में ज़्यादा बातें होती नहीं है. देखो, एनी लिस्ट ऑफ इरफान परफॉर्मेंसेज cannot be complete without some obvious names, है ना. There is Namesake, there is Paan Singh Tomar, Maqbool, Lunchbox, Hasil, Piku, Haider, ये सब हैं और ये सब सुनने के लिए तुम यहाँ नहीं आए और तुम्हें आना भी नहीं चाहिए. ये सब हर जगह मिल जाएगा. सो आई एम नॉट गोना टेक दीज फिल्म्स का नेम्स, ये मैं ऑलरेडी साइड कर रहा हूँ बिकॉज ये तो है ही, दीज आर द ऑब्वियस. मतलब तुम इरफान खान अमेजिंग परफॉर्मेंस बोलते हो, तुम्हारे दिमाग में मकबूल आता है, तुम्हारे दिमाग में हैदर का वो डायलॉग आता है कि मैं शिया भी हूँ, मैं सुन्नी भी हूँ, तुम्हारे दिमाग में लंच बॉक्स आता है, तुम्हारे दिमाग में हासिल आती है ना. आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट सम ऑफ द फिल्म्स विच इज नॉट मेंशन्ड इन दैट Irrfan performance की top 5, top 10 list, maybe because they weren't considered critically acclaimed films, maybe because his role wasn't the biggest and lead नहीं था. lead तो चलो हैदर में भी नहीं था, but still तुम समझ रहे हो ना, हैदर still has that artistic and very acting और performance oriented ये. but कुछ movies जिनकी मैं बात करने वाला हूँ, some of them are not your art house cinema, some of them are very commercial, very out there, but still इरफान वॉज दैट एक्टर जो कमर्शियल काम भी उतने ही मेहनत और उतनी ही ऑनेस्टी के साथ करता था जितने वो एक नेमसेक या फिर एक लंच बॉक्स करेगा, राइट. सो लेट अस गो अहेड विद द लिस्ट एंड द फर्स्ट फिल्म आई हैव ऑन माई लिस्ट इज स्लमडॉग मिलियनेयर. It's hot and I've got a desk full of murderers, rapists, extortionists, bomb bandits and you. So why don't you save us both a lot of time and tell me how you cheated? अब जब मैं इस एपिसोड के लिए ये लिस्ट वगैरह बना रहा था ना, आई हैड ऑल ऑफ दीज नेम्स एंड आई वांटेड टू राइट द नेम्स ऑफ द कैरेक्टर्स दैट इरफान इज प्लेइंग, एंड आई वेंट टू IMDb, विकिपीडिया, ऑल ऑफ दैट सिचुएशन, एंड स्लमडॉग मिलियनेयर के उसमें इरफान्स नेम हैज़ बीन रिटन एज पुलिस ऑफिसर, दैट्स इट. सो आई वांटेड टू नो भाई उसका नाम क्या है, व्हाट इज द नेम दैट्स बीन गिवन. मुझे तो नहीं मिला, इट जस्ट सेज पुलिस ऑफिसर, विच गोज टू सॉर्ट ऑफ शो
not in a bad way, कि it wasn't obviously the most important character. You had Anil Kapoor, Jamal tha, Latika thi, all of those people were there. And in general, in a film that had Danny Boyle, that had Danny Boyle's, crazy artistic storytelling, Vikas Swaroop's story, A.R. Rahman's music, Gulzar's lyrics, such an inventive screenplay, I think Irfan's performance as the stoic inspector holds its own. I mean, I'd even say more than Anil Kapoor और महेश मांजरेकर, जिनका रोल थोड़ा सिमिलर लेंथ का था, but his straightforward yet ironic encounters with Jamal are still memorable. मतलब when he वो एक सीन होता है जब वो $100 बिल पे किसकी फोटो है वो वाला क्वेश्चन आता है, तो वो उसको रुपी का नोट दिखाता है, 1000 रुपये का नोट दिखाता है और बोलता है इस पे किसकी फोटो है. That whole encounter and in general the whole fun that he's having with Jamal and the bewilderment that he has कि यार ये कैसा केस है, but at the same time because he has to solve this, that whole pressure is there. I think he really got that confusion and that thoda amazement or irony ekdam spot on. Number 4 on my list of amazing Irfan performances that need to be talked about is Billu, or if you guys are not ऐसा कैंसल कल्चर टाइप पीपल, बिल्लू बार्बर जो उसका पहले नाम था. कौन? बिल्लू बार्बर, बाल काटने वाले, हेयर कटिंग. नाम बोलो. आप उनको फोन दे दीजिए, वो जानते हैं, उनको दे दीजिए, वो आएंगे फोन पे. Irfan plays Billu, who is a barber, and while I had some tonal and screenplay level issues with the film overall, Irfan's performance in this Priyadarshan film fit to the T. अब देखो, अच्छी एक्टिंग का मतलब सिर्फ ऐसा मम्बल करना और बोरिंग तरीके से कॉन्वर्जेशनली बात करना नहीं होता, राइट? इट इज़ अबाउट फिटिंग इन टू द सुर ऑफ द फिल्म. मतलब अगर मूवी की पिच नेमसेक और लंच बॉक्स जितनी स्लो है, धीमी है, तो हम उस जोन में फिट होएं. बट इफ इट इज़ एज एग्जैजरेटेड एज बिल्लू, where there is comedy happening, there is dramatic scenes happening, there is dialogue bazi happening, as an actor you should be equipped for that as well, right? Which is exactly what Irfan did there. मतलब जब dialogue बाजी करनी है, he did that. जब dramatic moments करने हैं, in a lot of scenes he has some amazing scenes with Lara Datta, he has some amazing scenes with the kids in the movie, और end में जो पूरा encounter होता है शाहरुख खान के साथ, I mean that's just, and again as I said, शाहरुख खान another paradigm shifting actor, तो वो दोनों जब साथ में आते हैं तो that's like just amazing. The next film that I have on my list is a थोड़ा weird film, because usually Irfan performances में दूर तक इस पिक्चर की बात नहीं होती, but this movie is very very close to my heart. The film is Thank You by Anees Bazmi. पता नहीं चाय को दोबारा गर्म करने से जहर बन जाती है. जहर ऐसे ही खिला दो यार, मर जाते हैं हम. तो मैं नहीं बना कर लाती हूँ. नहीं, अरे चाय की बागान है मेरे, शुगर मिल्स खोल रखी है मैंने, दूध की डेयरियां है मेरी, चाय बना के बर्बाद करना चाहती हूँ मुझे. Now just as the previous film, इस film में भी Irfan gives an even bigger example on how to pick up the sur of the film and stick to it. Thank You is a film that is unlike anything that you would associate with Irfan Khan. It is, as I said, Anees Bazmi, एकदम no entry और उस वाले जोन की मूवी है कि 3 पति हैं, वो अपनी वाइफ्स पे चीट कर रहे हैं, all of that. And it has Akshay Kumar, Sunil Shetty, Bobby Deol, जो मतलब इरफान खान के दुनिया के कोसों दूर भी नहीं है, राइट? बट द सीन्स एंड द केमिस्ट्री दैट ही शेयर्स विद द 2 people, the scenes that he shares with Rimi Sen are some of the best examples of comedic acting there is. When there's a dialogue जिसमें वो बहुत ऐसे riddles वगैरह में उलझाता रहता है, क्वेश्चंस पूछता रहता है, एंड ही इज लाइक ये चाय इतनी ठंडी क्यों है, तो बोलती मैं गर्म करके ले आती हूँ, तो बोलता है तब तक ये कप पकड़ के खड़ा रहूंगा, ये चाय का कप है, वर्ल्ड कप है. आई मीन इट्स वेरी स्मॉल डायलॉग्स, या इट्स रिटन बट ही मेक्स इट सो एफर्टलेस, सो जस्ट ऐसा कि वो बंदा स्टोइक सा है इतना. इन जनरल आई थिंक इरफान हैज दिस क्वालिटी ऑफ मेकिंग funny things seem very dry. So I think Thank You is one movie, and overall the film is also really funny. Akshay Kumar वगैरह तो अपना काम करते ही हैं. The next film on my list is another one of those movies where इरफान के रोल की लेंथ इतनी लंबी नहीं थी, but then the kind of impact he had on the story was amazing. It is New York, directed by Kabir Khan. ये क्लीशे हम 50 बार सुन चुके हैं कि इस्लाम अमन का मजहब है, लेकिन हकीकत में अगर आप इस्लाम के हक में हो तो आप अमन के हक में. हाँ, इस मुल्क ने बहुत सारी गलतियां की हैं,
और हमें उन गलतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, लेकिन इस मुल्क की बहुत सारी अच्छाइयां हैं जो हमको नहीं भूलना चाहिए. In this movie, Irfan plays Roshan, an FBI agent who is the catalyst for the Neel Nitin Mukesh character to come back in the lives of John Abraham and Katrina Kaif, है ना? And dude, the man understood the assignment and delivered, and how. मतलब dialogue बाजी कर लो, जो थोड़ा एक banter between Neel Nitin Mukesh and Irfan Khan है वो देख लो. It's just on the tee. And how he switches from a very tense moment to something so dramatic is so impressive. I just can't even, मतलब मेरे को बात करते हुए इसके बारे में goosebumps आ रहे हैं. Because you remember that dialogue कि ओमार मैं एक मुसलमान हूँ, मुझे तकलीफ होती है जब मैं किसी को भटकते हुए देखता हूँ. Dude, he switches from anger to care like this. The way he delivers it really gets the point across. मतलब there is थोड़े से आंसू आ रहे हैं उसकी आंख में, बट ही इज नॉट रियली क्राइंग और ही इज नॉट इवन इमोशनल एज मच, बिकॉज देर इज एन अंडरलाइंग आइडिया कि मेरे को इस बंदे को कन्विंस करना है अपना काम करने के लिए. बट एट द सेम टाइम वो शातिर पने के पीछे से एक थोड़ा सा वल्नरेबल साइड भी निकल के आता है. आई जस्ट डोंट नो हाउ दीज एक्टर्स डू इट, मैन, बट आई मिस हिम फॉर दैट. एंड नाउ माई फेवरेटेस्ट, जो भी डालना है इसके आगे सुपरलेटिव डाल लो, माई फेवरेटेस्ट इरफान परफॉर्मेंस इज अ फिल्म दैट आई स्टिल कांट गेट ओवर. एंड ऐसा नहीं है कि इस मूवी की इतनी बात नहीं होती, बट आई थिंक जितनी होती है उससे बहुत ज़्यादा होनी चाहिए. एंड द फिल्म इज तलवार, डायरेक्टेड बाय मेघना गुलजार. क्राइम सीन को तुमने मच्छी बाजार बना दिया. आस पड़ोस वाले चलते फिरते लोग जर्नलिस्ट सब घूम रहे उसको कमरी बात समझ के. तेरे पे थोड़ी सी अकल होती ना, थोड़ी सी भी अकल होती तो ये केस वहीं खत्म हो गया. ये ऑनर किलिंग का आइडिया था किसका? I think this film is one of Irfan's most underrated films. I mean, he plays Ashwin Kumar, a CBI director who is investigating the Arushi Talvar murder case. And the way his optimism changes to sheer hopelessness on screen is so amazing. Just as I said in the New York wala point, it's not that वो angry अच्छा हो रहा है एक शॉट में और अगले शॉट में vulnerable हो रहा है. In the same shot, in the same dialogue, his expressions change from angry to, you know, vulnerable. In the same shot, his expressions change from optimistic to hopeless to, you know, angry. And the just वो जो गजराज राव के साथ उसके scenes है where he is commenting on UP police's botched investigation. It is so palpable. मतलब I was somebody who had seen the coverage of this case live on TV. And Irfan's performance brings out that frustration at the system that I think every Indian at that time was feeling. क्योंकि when you see him and when you see him talking to Gajraj Rao and when he asks कि लड़की का खून लाल रंग का था और नौकर का नीले रंग का, या वो जब बोलता है कि ऑनर किलिंग का आइडिया कितना था, you feel that. Again, he's playing a cop, but he's not playing that very filmy idea of a cop. He's playing a very real person who is actually very frustrated, and more than frustrated, surprised कि यार इतनी गंदी इन्वेस्टिगेशन कैसे हो सकती है किसी की. So it's like, it's so beautiful. Again, sticking to the sur of the film perfectly. It's funny, but it's not comedic. It's funny because it's infuriating, right? So I think his performance in Talvar is something that should be remembered and should be talked about more often. And in general, I think Irfan is somebody who we do celebrate, and we should celebrate more often, because he was somebody who showed the way to all of these new actors. Matlab, I don't think without Irfan we could have had somebody like Nawaz, we could have had somebody like Rajkumar Rao, Vijay Varma, Siddharth Chaturvedi. You know, all of these actors who are जो acting के craft को seriously ले रहे हैं, all of that I think is because of Irfan. So I think we definitely lost a great actor way ahead of his time, way before his time. And I think episodes like these can only, you know, help keeping his legacy alive for as long as possible, because I would say that he has definitely had an impact on the way I see films. Because मैंने जब पहली बार पान सिंह तोमर देखी थी, या पहली बार जब हासिल देखी थी, या पहली बार जब हैदर में उसका जब वो एंट्री, ओ डूड आई स्टिल रिमेंबर हैदर में जब उसकी वो सॉफ्ट फोकस से एंट्री होती है, ओ हो, आई मीन ग्रेट डायरेक्शन चॉइस फॉर विशाल भारद्वाज, बट दैट होल सीक्वेंस ऑफ हिम बीइंग रूहदार, ओ हो, मज़ा आ गया. So I think thank you Irfan for entertaining us, for engaging with us, for teaching us so many things. You are an amazing actor, and I think I know it, the whole world knows it, and thanks a lot.
And yes, this was another episode of Do I Like It. I will admit, मैं थोड़ा सा emotional हो गया था by the end of it, because it's Irrfan at the end of the day, and he's a great actor. But yes, you guys let us know what is your favorite Irrfan performance, and I'm sure you're gonna include all of these obvious picks, but उसके अलावा कुछ बताओ. Maybe share some movies that I wouldn't have seen. थोड़े hidden gems थोड़े निकालो इरफान के, and let me know, let us talk about him in the comments, because I think that's the best way to celebrate him and his legacy, right? To talk about him. So yes, this was Prateek, and I'll see you in the next one. Do I Like It is a Quint original podcast executive produced by Shelly Walia and Ritu Kapoor. This episode was hosted, produced and edited by Prateek Lidhu. The episode contains audio from Slumdog Millionaire, Billu, Thank You, New York and Talvar, and the theme music is from BMG Production Music. You were listening to the Quint's podcast.